हेलो एंड वेलकम टू काउच पोटैटो। आज हम बनाएंगे सुपर हेल्दी एंड टेस्टी उपमा इन जस्ट 7 मिनट्स एंड दैट टू विदाउट एनी फैंसी इंग्रेडिएंट्स। टू नो मोर वॉच टिल द एंड। तो पहले देख लेते हैं आज के इंग्रेडिएंट्स। हमारे पास है थोड़ी सी राई फॉर टेम्परिंग। Along with this, I will use curry leaves and green chilies. ये curry leaves are fresh from my own garden. I have tomatoes, 50 grams of paneer that I have cut into small cubes, some green vegetables. In this I have green beans, carrots and capsicum. But आपके पास जो भी vegetables available हो आप use कर सकते हो. You can also use different bell peppers. You can use spinach leaves. मतलब कुछ भी ग्रीन है तो आप यूज़ कर सकते हो उसको. आई ऑल्सो हैव सूजी विद मी. दिस इज़ 40 grams ऑफ सूजी. लेट्स स्टार्ट कुकिंग. नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू ड्राई रोस्ट दिस पनीर. पनीर रोस्ट करने के लिए आपको बिल्कुल ऑयल नहीं चाहिए. आई जस्ट शो यू हाउ इट इज़ डन विदाउट यूजिंग एनी ऑयल. तो आई हैव दिस तवा जिसको मैंने थोड़ा सा हीट कर दिया एंड इस पर मैंने सॉल्ट स्प्रिंकल कर रहा है. सॉल्ट से क्या होता है, पनीर स्टिक नहीं करता है एंड इट कम्स ऑफ ईजिली. तो अगर आपको ऑयल नहीं यूज़ करना है आप सॉल्ट यूज़ कर सकते हो. तो हमारा तवा इज़ माइल्डली हॉट. बहुत हीट नहीं करना है. वी डोंट हैव टू बर्न और चार द पनीर, वी जस्ट हैव टू कुक इट अ लिटिल. सो आई एम कुकिंग माई पनीर ऑन लो फ्लेम. इट डजंट टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड जब तक ये हो रहा है लेट्स मूव ऑन टू आवर उपमा. For the upma, I've taken a kadhai and in this I'm adding just 5 grams of oil or ghee. इस घी में we'll add राई and my curry leaves. In the meanwhile, we'll check on our paneer whether it's done or not. My tip here is that if it is done, it will come off easily. But अगर वो अभी भी आपके तवे से stick हो रहा है, it means it needs more time. So our paneer seems to be done. It's a beautiful golden brown. So we'll just flip it. Coming back to our upma, our rye has crackled. तो अब इसमें हम डालेंगे अपने वेजीज. दीज आर द वेजीज दैट वी हैड कट. नाउ वी जस्ट हैव टू सॉटे दीज. वी डोंट हैव टू कुक दीज कंप्लीटली. The paneer seems to be done now, so I'm just turning off the gas for the paneer. We'll use it later. Our veggies are a little soft now. इसमें I'll add in the tomatoes. This is one small tomato or maybe half a tomato, and I'll also add in the green chilies. One tip here is that if you want the veggies to have a bright color, तो never cover them and cook. अगर आपको किसी सब्जी में या किसी डिश में ब्राइट कलर चाहिए वेजिटेबल्स का तो उनको ओपन में ही कुक करना चाहिए. After about half a minute, I'm adding in my suji. Some people like to dry roast it beforehand, but I don't do that.
because this way it saves a lot of time for me and also it tastes just the same. So I roast it along with my veggies. अब फटाफट this सूजी will start changing its color. मतलब it was white, now it's turned to creamy yellow. बस थोड़ी देर और like maybe a minute and then I'll add in water. सूजी रोस्ट हो गई है and it has changed to a beautiful yellow color. You don't have to overcook it or anything. मतलब make sure that it doesn't get burned. So you don't want that burnt smell or flavor in your upma. And also you need to keep it pale so that आपके उपमे का color white रहे. I'm adding a little bit of red chili powder, but you know it depends on your taste. अगर आपको spicy नहीं चाहिए तो you can avoid this. Also उपमे में और कोई मसाले की need नहीं होती है. I like it as it is. I like the original upma flavor. You can now add salt to taste, and I'm adding water to this. Now I've preheated the water so that cooks quickly. So you can also use an electric kettle to heat your water beforehand. अब ये बहुत ही boiling water है, so make sure you don't burn yourself and keep stirring as you add the water because you don't want any lumps to be formed. See how quickly it comes together, all of it comes together. I'm adding 1 and a little less than half, like 1.5 cup of water. जैसे ये कुक होएगा and it will start boiling, its consistency will change and it will become thicker. तो आपको जितना thick पसंद है अपना उपमा उतना thick रखेंगे इसको. Yeah, once that is done, we'll add in the paneer that we had roasted. So this is my paneer that I had roasted. This just adds a little more protein to your upma and also it makes it more filling. So this is perfect for breakfast. अगर आपको लगता है कि your upma has become too thick, you can just add a little more water. So now our upma is done. Let's plate it and eat. You can have this with a dash of lemon and your favorite herbal tea. It has only 328 calories. Do try this recipe out and let me know how it was. Oh, and if you want to join me in my fitness journey, do like and subscribe. I'll see you next time.